Sheila Pandey, ma'am, please kindly off your video. Good afternoon, Himanshu sir. Mitali ma'am will be joining within 10 minutes, sir. Okay. Because she's facing some technical issues, so she's connecting with another network, so it will take 10 minutes. Okay. All the participants, you need to bear us. Ma'am will be, RP will be joining within 10 minutes. So, good afternoon, all the participants. By the time the RP is joining, I just wish to remind you a few things about because we have started sharing the list of qualified candidates. So for that, I wish to clarify it explicitly that the participants are required to join the training by the same profile with which they have been registered by the STNC or the principal. And not only they have to join, but they have to sustain joining for up to 40 minutes at least. And thereafter, you have to adhere to the questions or the feedbacks by the same link, by the same profile, by the same email ID. And then only your candidature is ascertained whether the same candidate has qualified, whether the same candidate had been in the meeting for the 40 minutes time and has been registered as well. So all the three parameters should have been, say, affirmed without doubt in order to qualify for this the successful completion of training. So please keep it in mind. This is otherwise this becomes a headache of your principal or the STNC to get the certificate for you. Granting certificate is not that easy.
we'll have to adhere to the rules, we'll have to adhere to the technical issues also.
Someone joined the name of Aryavata Sahodaya. Kindly rename yourself. Otherwise, you have to leave from. You have been asked to leave, or we will make you leave. Participants, don't worry. Ma'am is RP ma'am is not yet joined. That's why there is no sound is coming up. Don't worry. Within she's trying to connect it immediately. Let's see.
participants are please join. उनको connect कर दीजिए sir. हो गया. Good evening, all of you. Good evening. I'm so sorry for being late. But actually, I don't know what had happened. Somehow my network was not working and I could not get in. So I'm so thankful to each one of you for waiting for me. And may I request the permission? Manshu sir, Good Radhika afternoon. ma'am. please start sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon. Finally, afternoon is good enough. Every day is an issue. I was Yeah. using my laptop in the school till the last hour and I shut it down and I came home and then the network was not working. I don't know why. But on my mobile, it was working and I could not just align myself. Thank you so much for waiting, friends. Without making any delay, please start. Yes, sir. Thank you so much. Okay. So today our topic is a very interesting topic. And we all know that most of us, all of us rather, are working in private schools. So in any school system, there's actually a triangle in which we have the students and the parents and the teachers. And when all three of us work together, then we can see the success of our students. But in a private setup, in a kind of setup in which we are, out of these three people, the parents also become a very, very strong pillar. A pillar which can make your child successful, or I should not say unsuccessful also. So what is the method? How we can keep our parents in loop? Or rather, I would also like to answer why we should keep our parents in loop to make our communication system strong, to make our students better. How to do this? So today, our topic is related to this. So just give me the permission to share my screen. And the topic is very interesting. The topic is in front of us. Connecting and communicating with parents. Okay, I hope my screen is visible to you. Let me put it into slideshow view so that it is better visible. Is it okay, all of you? Yeah. So today's training topic is connecting and communicating with parents. I hope you've understood why parents are important, because they are the third pillar of success of a child. And even if you shift one pillar, your entire structure will fall down. So the first pillar is the child himself or herself. The second pillar is a teacher. And the third pillar are parents. So how to keep our parents in loop? As teachers, many of you keep on complaining. मैम इसके मम्मी पापा को कितना भी बुलाओ ये आता ही नहीं है, इसके मम्मी पापा ध्यान देते ही नहीं है, इसके मम्मी पापा पढ़ाते ही नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये जो मम्मी पापा वाला सिचुएशन है, ये जो पेरेंट का रोल्स है, ये इनको हमें समझाना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डोंट वांट टू डू एनीथिंग फॉर द चाइल्ड, बट many of the parents actually don't know how to go about it. They don't know where to do the hand holding, where to leave the child free, where to connect with the child. They are not understanding. So teachers and the management is a very important role to make the parents realize their values, their importance, their roles, their responsibilities.
So in today's topic, we are going to discuss all these things in short. So first of all, let me tell you what is the importance of communication. Why you should establish communication with your parents. बहुत सारे लोग ये भी तो सोच रहे होंगे कि भाई पेरेंट की क्या जरूरत है, हमें पेरेंट को सिखाने का क्या जरूरत है, हम तो खुद अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम पेरेंट्स को उसमें क्यों इन्वॉल्व करें, बच्चा पढ़ता है, हम पढ़ाते हैं, पेरेंट्स का काम खाली फी देना है. ऐसा नहीं. पेरेंट के साथ इफ यू स्टे कनेक्टेड, इफ यू स्टे in tune with the parents, then you can establish effective leadership. जैसे ये मैं प्रिंसिपल्स, हेडमिस्ट्रेस, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि आप क्या हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है, आप पेरेंट्स से क्या चाहते हैं, ये आपको बताना होगा थ्रू communication. Somebody is complaining that I'm not audible. Dear, you check your network, beta. I think your network is facing the same problem today as my network was facing. I hope I'm audible, all of you. Next is, yes, ma'am, we are audible. When you communicate with the parents, then you can recharge them. You can motivate them and you can give them moral development. क्योंकि पेरेंट ये समझ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ. मान लीजिए 12 का बच्चा है, एक 11 का बच्चा है और पेरेंट बेचारे आर्ट्स के ग्रेजुएट हैं और बच्चा पढ़ रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. अब पेरेंट कहेगा मैं क्या करूं, मैं उसको फिजिक्स थोड़ी पढ़ा सकता हूँ, मैं उसको केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ा सकता हूँ मैडम, तो मैं क्या बताऊं उसको बैठकर. तो आपको पेरेंट को समझाना होगा कि आपको पढ़ाना नहीं है बच्चे को, उसके लिए तो हम हैं, लेकिन आपको मोटिवेट करना है, उसके मोरल को डेवलप करना है. होते हैं ना बहुत सारे बच्चे स्कूल में जो कभी कोई किसी का सामान उठा लेते हैं, कभी किसी के साथ मारपीट कर लेते हैं, कभी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, कभी इनडिसिप्लिन बिहेवियर शो करते हैं. तो पेरेंट्स के थ्रू आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं. तीसरा, इट हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग. हाउ इट हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग? फॉर एग्जाम्पल, Sunil Kumar Chaudhary is again complaining about the sound. So suppose, my dear teachers, you want something from the child which you're not able to achieve because parents are not helpful at home. So if you bring the parents into the loop, then whatever you want from the child, you can communicate to them and they will in turn help children do that work. It promotes cooperation and peace. Yes, PTM के दिन heat, music, loud rap song होने से अच्छा है कि हम साल भर पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन में रहें, उनको बता दें कि आपका बच्चा 40% के लायक है, हम ये मेहनत करेंगे, आप ये मेहनत करेंगे तो हम लोग 60 तक जाएंगे इस साल, फिर अगले साल वहां से स्टार्ट करेंगे. नहीं तो अचानक आपके पीटीएम में पेरेंट्स आएंगे और कहेंगे आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं, आपने मुझे कुछ प्रॉब्लम सुनाया ही नहीं, मुझे तो लग रहा था मेरे बच्चे को 90 आएगा, पिछले स्कूल में तो वो बहुत अच्छा कर रहा था. सो यू नो, प्लीज रिमेंबर कि कोऑपरेशन एंड पीस रहने से आपके बच्चे अच्छा काम करेंगे. नेक्स्ट, very true. Next is acts as a basis of coordination and cooperation. All three working together can lead to the success of the child. Acts as a basis of decision making. जैसे मान लीजिए मैं उसी दिन अपने स्कूल में डिस्कस कर रही थी कि अभी आपको पता है CBSE has given the option of basic maths and standard maths. ठीक है, तो कैसे कन्विंस करें पेरेंट्स को कि नहीं मैम आपका बच्चा जो है उसको बेसिक मैथ्स दिलाइए. हाउ विल वी कम्युनिकेट? अगर आप अपने किसी भी पेरेंट को कहेंगे मैम आपका बच्चा बेसिक मैथ्स के लायक है, आपको लगता है पेरेंट एक बार में मान जाएगा? पेरेंट आपसे ये कहेगा कि मुझे तो उसको इंजीनियर ही बनाना है, मुझे तो उसको मैथ्स ही पढ़ाना है +2 में, आप कैसे कह सकते मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, मैं कोचिंग करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, सारी बातें आपको पेरेंट्स कहेंगे. आपको पेरेंट्स के साथ बैठकर डिस्कस करना होगा, बात करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, प्रोज एंड कॉन्स दिखाने होंगे, तब जाकर एक सही डिसीजन पे आप और पेरेंट दोनों पहुंच सकते हैं. एंड दैट डिसीजन विल बी फॉर द गुड ऑफ द चाइल्ड. नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी. अगर आप अच्छे से किसी भी चीज को कम्युनिकेट करेंगे ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके रिसेप्शन पे, आपके स्कूल के रिसेप्शन पे, आपके स्कूल के पीटीएम में पेरेंट्स शोर नहीं करेंगे. और अगर वो शोर करेंगे भी ना, तो वो पॉजिटिव वाला शोर होगा, नेगेटिव वाला नहीं. आपकी तारीफ करने के लिए शोर करेंगे, लेकिन कंप्लेन करने के लिए बहुत कम शोर होगा. वैसे 0 तो नहीं हो सकता स्कूल सिस्टम में, लेकिन बहुत कम शोर होगा. तो communication, good communication is the source of all these good things which will happen in your school through your parents. Communication means understanding the instructions, acquiring new skills, making requests, asking questions, and relaying information with ease. Please remember, when we say communicating with the parents, and what is the meaning of communicating with the parents? यानी हम उनको
इंस्ट्रक्शन समझाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, हमारे स्कूल में एक नया ईआरपी लॉन्च हो रहा है। तो जब हम ईआरपी लॉन्च तो हम कर रहे हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, हम बहुत कंप्यूटर फ्रेंडली लोग हैं, हमने ईआरपी लॉन्च कर दिया, लेकिन हम पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे? पेरेंट्स को ईआरपी लोड करने से लेकर चलाने तक, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने तक एक एक इंस्ट्रक्शन आपको देना पड़ेगा, वो भी स्टेप वाइज, ताकि मेरा पेरेंट मेरे साथ साथ चले और समझे। तो वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस यू गिव टू द पेरेंट्स, दैट शुड बी वेरी क्लियर, वेरी गुड, क्रिस्प, सो दैट पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड विद ईज। नहीं तो आपके स्कूल में भी जरूर होता होगा, है ना, हम लोग हर किसी के स्कूल में कभी ना कभी होता है, किसी टीचर ने डायरी में कुछ लिख दिया, पेरेंट का फोन आना शुरू हो गया, मैम कौन सा रंग लाना है, मैम कितना लाना है, मैम कैसे लाना है, मैम कब लाना है, because the instruction given, the communication was not very clear. Making requests, we make requests, dear parents, we request you to please come for this. We're making requests, we ask questions, we relay information with ease. These are the keys of good communication. Now, why effective communication is involved? Because अगर आप effective communication करेंगे, अगर आप अच्छी communication करेंगे, तो याद रखिएगा, जितने भी लोग उस communication में शामिल हैं, one party, the other party, all will be happy, satisfied and feel accomplished. यानी अगर आप, एक बच्चा है, मान लीजिए आपके स्कूल में, हम लोग सब स्कूल में होते हैं ऐसे बच्चे जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, टीचर की बात नहीं मानता है, उसे अच्छे नंबर नहीं आते हैं, लेकिन मान लीजिए पीटीएम के दिन वो पेरेंट आए बेचारे आपके स्कूल में, और आपने दनादन शुरू कर दिया, आपका बच्चा तो बहुत खराब है, वो तो पढ़ता ही नहीं है, वो तो एग्जाम में फेल करेगा, ये करेगा, कुछ नहीं बन पाएगा, आप ध्यान नहीं देते, आप कॉपी नहीं चेक करते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, आपको क्या होगा? बात, आप सब सही बातें बता रहे हैं, आप सब सच्चाई ही बता रहे हैं माय डियर टीचर्स, लेकिन होगा क्या? दैट पेरेंट भी फाइनली एजिटेटेड हो जाएगा और सोचेगा टीचर बायस्ड है, मेरे बच्चे के बारे में सारी नेगेटिव बातें उसने बताई। इज इट इफेक्टिव कम्युनिकेशन? आप तो ये कहेंगे कि मैम मैं जो बोलना चाहता था, जो सच्चाई है वही मैंने बोला, और आप सही भी है, लेकिन सच्चाई को पेश करने का, प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है। देयर इज अ वे हाउ यू प्रेजेंट योर थॉट्स into somebody else's mind. So always remember, communication तभी सही हो सकता है, communication तभी effective हो सकता है जब वो और आप दोनों satisfied and accomplished feel करो। तो यानी आपको शुरू कैसे करना चाहिए? आपको कहना चाहिए, आइए सर, थैंक यू सो मच, आप आए अपने बच्चे के लिए, आई एम फीलिंग सो गुड दैट यू आर हियर, यू नो Raju, for example, the child is Raju, this is just a name. Raju plays wonderful guitar and he's so actively participating in all the activities of the school. ये जनरली ऐसा होता है, जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े पीछे रहते हैं, वो चाहते हैं कि हम फील्ड में रहें, तो हम ये करें, हम वो करके अपना टाइम पास करें, हम क्लास में नहीं जाए, तो आप उसको पॉजिटिवली प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सर, राजू को ना अभी ये करने की जरूरत है। तो जब आप किसी भी कम्युनिकेशन को प्रेजेंट अच्छे से करेंगे, कर्टियस वे में करेंगे, कंसाइज वे में करेंगे, उसकी बात भी सुनने को तैयार रहेंगे, अभी वो होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जब भी आप पेरेंट्स से बात करें, प्लीज इस बात को याद रखें कि सिर्फ आपको नहीं बोलना है, उनको भी बोलने का पूरा मौका देना है, और जो भी आपकी बातें हैं उसको आराम से धीरे धीरे प्रस्तुत करना है, ठीक है? जैसे आपको छोटा छोटा, आपको एक बार में डॉक्टर कहता है क्या 10 इंजेक्शन लगा दीजिए एक साथ, काम खत्म। वो कहता है रोज एक इंजेक्शन लगाइए, रोज एक इंजेक्शन लगाइए। सिमिलरली आपको भी छोटे छोटे डोजेस पेरेंट्स को देने हैं। और मैं ये समझती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है, हो सकता है आप डिफर करें मेरे थॉट प्रोसेस से, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 99% ऑफ द पेरेंट्स एक्चुअली डोंट नो कि उन्हें अपने बच्चों को किस तरीके से हेल्प देना चाहिए। वो हेल्प करना चाहते हैं, उनके पास समय भी हो सकता है, हो वो बैठे हैं घर पे, लेकिन वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे अपने बच्चे के साथ, उनको भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। वो जानते ही नहीं कि बच्चे का क्या सुधारना है, क्या चेक करना है। स्पेंड टाइम विद योर चाइल्ड, ये भी बहुत कॉमन हो गया ना, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर किड्स। क्वालिटी टाइम का मतलब क्या हुआ? पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड। ये सब बोलने के लिए एज अ टीचर आपको एक छोटी छोटी बातें समझानी होंगी कि सर जब आपका बच्चा घर जाता है तो आप उसके साथ ये करिए, ये करिए, ये करिए, यहाँ बैठिए, वहां जाइए, A to Z इन डिटेल्स, ये समझ कर कि वो भी आपका स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन वो रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट है। रिस्पेक्टेबल तो सारे हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, ओके, ये समझ कर। नेक्स्ट,
Communication skills are very important because you have to inform, you have to influence, and you have to express your feelings. अगर आप मिताली मुखर्जी की सब बातें ध्यान से सुनते हैं तो आप इसलिए नहीं सुनते कि मिताली मुखर्जी बहुत जानकार हैं, बहुत बड़ी रिसोर्स पर्सन है, नहीं, आप इसलिए सुनते हैं क्योंकि मिताली मुखर्जी कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगती है, किसी भी कारण से अच्छी लगे लेकिन अच्छी लगती है. दिस इज नोन एज इन्फ्लुएंस. मुझे ये इंसान इन्फ्लुएंस करता है, मुझे इंसान अच्छा लगता है, मुझे इंसान पसंद है, तो हम इसकी बात सुनेंगे. अगर आपको मिताली मुखर्जी नाम से ही चिढ़ है, नो मैटर सेशन कितना अच्छा होगा, आप कहेंगे यार शी स्पीक्स अ लॉट ऑफ ब्ला 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 ब्ला. Are you understanding? So please remember this, that you are a teacher. You should be able to create an influence on people around you. And when I say people, according to this session, it is parents. So जो parents मेरे आसपास हैं, मेरे पर्सनालिटी से, मेरे बातचीत करने के तरीके से, they should be influenced. अरे वाह, मैम कितना अच्छा बोलती हैं. बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे रूम में, कहते हैं मैम आपने इतनी छोटी छोटी चीजें नोटिस की, सब आप भी नोटिस करते हैं लेकिन आप वो बताते नहीं, क्योंकि आप टीचर है ना, आपको मार्क्स से मतलब है, तो आप हमेशा शुरू कर देते दे दनादन मार्क्स पे. आप पेरेंट के आते ही आप सिक्सर मारने की कोशिश करते हैं. नहीं, 1-2 रन से भी आपका काम चलेगा. यू विल अचीव योर टारगेट. थोड़ा चेंज लाने की कोशिश करिए. एंड कम्युनिकेशन मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स. सिर्फ फैक्ट्स नहीं, कम्युनिकेशन में सिर्फ फैक्ट्स नहीं होते, कम्युनिकेशन में फीलिंग्स भी होती है. सो जब आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट करें, इन्फॉर्म करें यानी इसको फैक्ट्स दें, इन्फ्लुएंस करें और अपनी फीलिंग्स को भी वहां प्रस्तुत करें. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. क्या क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स है? प्लीज रिमेंबर व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर पेरेंट्स. Thank you, dear educators. My chat box is full of your love and your trust and your respect. Thank you so much for that. Now, elements of effective communication क्या है? Effective communication किसको कहते हैं? सबसे पहला effective communication का key is trust. Never break this. एक पेरेंट, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रस्ट करके आपके बच्चे के बारे में कुछ बताते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, हो सकता है बचपन में उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, वो बुली हुई हो, उसके साथ कुछ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ हो, उसका स्कूल चेंज हुआ हो, उसकी मदर की डेथ हो गई होगी, उसकी दूसरी मदर होगी. टीचर को पता रहता है लेकिन बच्चे को बहुत समय नहीं पता रहता है कि शी इज माई स्टेप मदर. वेरी टीचर नोज दिस. घर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी, so many parents come and share it with us. So what is your work as a teacher? उस ट्रस्ट को मेंटेन रखना. कभी भी किसी कीमत पर उस ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना है, so that parents tell you more and more and more about their kids. And the more you know about the kids, the better teacher you will become, reformed teacher you will become, more you will be able to do for the children. Number 2 is respect. Whenever you're talking to the parents, or rather anybody, whenever you're talking to people, your parents especially, please don't be angry on them. Don't show disrespect because the child is not doing well in school. अगर एक बच्चे को 0 out of 100 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका पेरेंट रिस्पेक्ट पाने के काबिल नहीं है. प्लीज, हो सकता है आपके मैथ्स में, आपके इंग्लिश में, आपके हिंदी में उसको 0 आ रहा है, हो सकता है किसी और चीज में वो हीरो हो. तो रिस्पेक्ट किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. नंबर 3 इज अंडरस्टैंडिंग. और अंडरस्टैंडिंग कब होगी? जब हम किसी की बात सुनेंगे भी. मेरी तरह मत करिएगा जैसे मैं सिर्फ बोल रही हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है. आपको सबसे पहले पेरेंट को अपॉर्चुनिटी देना है टू स्पीक. यू लिसन एंड देन व्हाट यू डू इज ट्राई टू से व्हाटएवर यू वांट टू. एम्पैथी. देखिए हम लोग, मैं भी प्रिंसिपल हूँ, आई नो मैं भी बहुत समय गलत कम्युनिकेशन करती हूँ. मैं पेरेंट्स पे गुस्सा कर देती हूँ. कभी मैं पेरेंट को कहती हूँ आपका बच्चा, आपको समय निकालना ही पड़ेगा, आप समझिए. लेकिन आप सच में सोचिए कि जिस पेरेंट में दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, या फादर कहीं बाहर रहते हैं, मदर पढ़ी लिखी मान लीजिए नहीं है, या है भी तो दिन भर वो जॉब करती है, शाम के 6 बजे जॉब से आती है, वो क्या कर सकती है अपने बच्चे के लिए? तो आपको छोटे टिप्स देने हैं. जैसे मैम, आप 6 बजे आती है ना, आप और आपका बच्चा, वो दूध पिएगा, आप कॉफी पीजिए या चाय पीजिए, लेकिन दोनों एक साथ पीजिए. टॉक टू ईच अदर. आज क्या हुआ मम्मा तुम्हारे ऑफिस में, आज तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ,
let's know what is happening in the school, ताकि बच्चा बताए तो कि स्कूल में किसी ने उसको बुली तो नहीं किया, किसी ने उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट तो नहीं हुआ, किसी ने उसके साथ मारपीट तो नहीं की, कि टीचर्स आए पढ़ाए तो होमवर्क मिला या नहीं। मैसेजेस स्कूल के आप चेक कीजिए, मतलब आप पेरेंट्स को ये टिप्स दे रहे हैं। उसके बाद आप वीक में एक दिन फिक्स रखिए जब आप अपने बच्चे को कहीं बाहर ले जाएंगे घूमने, और सिर्फ अपनी बात करेंगे, स्कूल की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। What we want is that the child and the parent should communicate with each other. इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करिए। इस प्रोसेस को अगर आप फैसिलिटेट करेंगे तो बच्चा घर जाके सब बात बताएगा, बच्चा घर जाके सब चीजें बताएगा, पेरेंट्स को स्कूल के बारे में पता चलेगा, पढ़ाई के बारे में पता चलेगा, एंड दे विल पिक अप अ रोल फॉर देमसेल्व्स। अगर मैं एक मदर हूं, मान लीजिए एक बच्चे की, और मुझे लगता है स्कूल में सब ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छा ये होता है, चलो ठीक है, आई एम रिलैक्स्ड। लेकिन अगर मुझे पता चले कि भाई मेरे स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो रही है, तो एज अ पेरेंट मैं क्या सोचूंगी, व्हाट एक्सटर्नल हेल्प आई कैन गिव टू माय चाइल्ड फॉर संस्कृत। तो वो एक्सटर्नल हेल्प जैसे मिलेगा वो बच्चा अच्छा कर लेगा। हो सकता है बच्चे को लगता हो संस्कृत की पढ़ाई अच्छी नहीं होती, उससे बच्चे को संस्कृत में इंटरेस्ट नहीं हो, तो अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प उसको दे, या पेरेंट को मान लीजिए संस्कृत आता हो, वो बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प दे दे, तो उसका संस्कृत इंप्रूव कर जाएगा, मेरा काम हो गया। As a teacher, what do I want? As a teacher, I want that my child should perform well. मेरा पर्पस हमेशा घी सीधी उंगली से नहीं निकाली जाती, कभी कभी उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं बच्चा संस्कृत में अच्छा करे, तो हो सकता है आपको बच्चे को पेरेंट को सजेस्ट करना होगा कि साथ में बैठ के वीक में एक दिन आइसक्रीम खाइए, साथ में बैठ के कॉफी पीजिए, साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करिए। Are you getting? Next is where this is empathy. You know what actually the parents feel, what actually the parents want. You have to understand this. बड़ा lecture PTM में देने से कोई फायदा नहीं होता. You have to give small tips to the parents. Sir, आप एक महीने ये try करके देखो. Sir and ma'am, आप 15 दिन ये try करके देखो. फिर you can again come back to me. This is my WhatsApp number. You can come on the 3rd Saturday and talk to me during this time to this time. Are you understanding this? You can do this. Okay. Next is resolution. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक रेजोल्यूशन होना चाहिए। क्या? अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मान लीजिए रेजोल्यूशन लेके जाते हैं कि पेरेंट कैसा भी हो मेरी आवाज ऊंची नहीं होगी। These are elements of effective communication. You must have that last thing in your mind. This I will crack at the end of today's video. नैतिक के पापा आएंगे, नैतिक I've taken a ऐसी नेम, वर्चुअल नेम, नैतिक के मम्मी पापा आएंगे और मैं रेजोल्यूशन लेता हूं या लेती हूं कि मैं ये चीज उनके साथ डिस्कस करूंगी। That should be at the back of your mind, in the front of your mind every time. Okay. Next. So, effective communication के 7 C's हैं। आप 7 C के हिसाब से इसको याद रखो। मैंने कोशिश की है एक टीचर की तरह आपको थोड़ा एक फॉर्मूला दे दूं जिससे आपको याद रहेगा। नंबर 1, बी क्लियर, उल्टा सीधा बात नहीं करना। अब मान लीजिए आपको एक मैसेज देना है that tomorrow all students are expected to report to school at फलाना time in फलाना यूनिफॉर्म। अब हम ये बात लिखने की जगह पहले लिख दे, अच्छा साहब, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट केम इनटू दिस इनटू दैट, ये सब लिखे और फिर लास्ट में एक लाइन दे दे, प्लीज रिपोर्ट टुमारो एट फलाना टाइम। हुआ क्या? क्या किया आपने? पेरेंट को आपने बोला हिस्ट्री ज्योग्राफी सब समझा दिया और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपने लास्ट में लिखी। तो योर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन लिंक्स गेट डाइल्यूटेड। Don't dilute your communication. Say what you want to say. Don't keep beating around the bush. Okay. So be clear, be concise, simple words. बहुत सारे स्कूल्स का मैं सर्कुलर मैं देखती हूँ कि उसमें इतने भारी भरकम इंग्लिश के शब्द होते हैं कि भाई हमारे जैसे प्रिंसिपल को भी दिक्कत हो रही है समझने में, तो बेचारे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको दिक्कत हो सकती है। हम तो रात दिन एजुकेशन में ही है, फिर भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी हमें डिक्शनरी का हेल्प लेना पड़ता है। तो आप सोचिए वो पेरेंट्स हैं जिनको रोज स्कूल जाकर लेक्चर नहीं देना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज डिक्शनरी से 10 पेज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनको भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप ऐसे शब्दों का चयन करें, ऐसे वर्ड्स यूज करें जो सिंपल, कॉन्क्रीट मतलब ये बोलना है बस, दैट्स इट, अननेसेसरी नहीं बोलना है। क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट। Whenever you are communicating, be very sure with the parents and with all also that you must not make spelling mistakes, punctuation mistakes, grammatical mistakes. That sets a very bad example. Coherent का मतलब सबको एक साथ लेके चलिए।
आप ऐसा कोई कम्युनिकेशन मत करिए जो लगे यार तो दिमाग ही इस आदमी को कैसा बात कर रहा है ये। हम लोग कहते हैं ना बहुत समय, पागल है क्या, कैसी बातें कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आपके शब्द, आप जो बोलना चाह रहे हो उसका सेंस होना चाहिए, कंप्लीट। आपने ये तो लिख दिया कि कल 8 बजे स्कूल जाना है, लेकिन आपने ये तो नहीं लिखा कि बसेस आएंगी या नहीं, कौन से यूनिफॉर्म में आना है, लंच लाना है कि नहीं, डिस्पर्सल कब होगा, कैसे बच्चा पहुंचेगा, क्या सोचकर पहुंचेगा। तो इट शुड बी कंप्लीट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट courteous, be respectful, friendly and honest. So what are the 7 C's of communication? Clear, concise, concrete, correct, coherent, complete and courteous. Okay, now why are our parents important? I've already told you, they are the link between you and the child. You teach something in the school, the child goes home. What is the child doing at home? You don't know. And the very next important thing जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, they are our brand ambassadors. In short, they are your assets. Because no school runs on hoardings and flexes and digital platforms. आप कितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अच्छी अच्छी बातें करो, मेरा स्कूल ये करता है, मेरा स्कूल वो करता है, मैं ये दिवस मना रहा हूँ, वो दिवस मना रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि जो पेरेंट आपके स्कूल के गेट से निकलता है वो आपके बारे में क्या बात करता है, जो बच्चे आपके स्कूल के हैं वो क्या स्पीक कर रहे हैं, या उनका बिहेवियर, उनका यूनिफॉर्म, उनके बातचीत करने का तरीका, उनके रिजल्ट्स, दे आर स्पीकिंग. So please remember that they are your brand ambassadors. They are your assets. So communicating with them is very, very important. Okay. Now, why is it important to communicate, collaborate with parents? This is also something very important. Why do you want to communicate and collaborate with the parents? Because parent, teachers, and students is a key for creating a successful classroom. आपको लगता होगा मैम क्लासरूम की बात कर रही है, पेरेंट्स की बात कर रही है, क्यों, कहाँ है पेरेंट, तो मेरे क्लासरूम में है नहीं, फिर टीचर स्टूडेंट तो समझ में आ रहा, पेरेंट कहाँ है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। मान लीजिए आप एक क्लास लेने गए, आप बड़े अच्छे मूड में हैं, आपको बहुत मजा आ रहा, आप तैयारी करके गए आज का क्लास लेने, और जैसे ही आप क्लास में घुसते हैं एक बच्चा अपनी डायरी लेकर आता है, मैम, सर, माय मदर हैज रिटन। उस डायरी में क्या लिखा हुआ है, डियर टीचर, I think you are very irresponsible. You are not correcting my child's notebook. The correction is wrong. So many chapters are left. Final exam is coming. When will you finish? And you give everything for homework. You don't give any classwork. You don't do any classwork. मान लीजिए लिखा हुआ है। अब बताओ मेरे प्यारे टीचर्स, आपके मन मिजाज का क्या हाल होगा? आप चाहेंगे, क्या आप ये चाहेंगे कि आप उस क्लास को बहुत सक्सेसफुली ले पाएंगे? चाहने से भी क्या ले पाएंगे? हमारा पेरेंट हमारे क्लासरूम में हमेशा है। वो जो बच्चों की आंखें आपको दिख रही है ना, उसमें पेरेंट्स की भी आंखें हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो प्लीज रिमेंबर दिस कि आपका बच्चा जब घर जा रहा है वो स्कूल की तस्वीर है, और आपका बच्चा जब स्कूल आ रहा है वो घर की तस्वीर है। अगर आपके एक बच्चे ने क्लास में बहुत गंदा कपड़ा पहना हुआ है, नहाया नहीं, बदबू दे रहा है, क्या आप क्लास में अच्छे से पढ़ा पाएंगे? तो फिर आप क्या सोचेंगे, इसके पेरेंट्स को नहलाते क्यों नहीं है, इसको साफ कपड़े क्यों नहीं पहनाते? द पेरेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास, ऑलवेज द पेरेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास। सो प्लीज रिमेंबर दिस कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, सब घर पे रिले हो रहा है, और घर पे जो कुछ हो रहा है थ्रू द चाइल्ड, सब स्कूल में रिले हो रहा है। द चाइल्ड इज द सेंटर पॉइंट। इसलिए प्लीज रिमेंबर, whatever you're speaking in the class, whatever you're doing in the class, everything is being relayed. So you have to maintain that collaboration, that good thought process, that mingling, and that respect for the parents through your communication. Remember, अगर आप क्लास में खड़े होकर बोलते हैं, none of your parents are very bad, they're not literate, they don't do anything for you, आप ये मत सोचिएगा बच्चे को बोल दिए, वो बच्चा घर जाएगा और पेरेंट को यही बात बोलेगा, और फिर कल आपके नाम पे चिट्ठी आ जाएगी स्कूल में। समझ रहे हैं आप? तो पेरेंट्स हमेशा क्लासरूम में मौजूद है। नेक्स्ट, रिसर्च बताता है दैट पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कैन फ्री टीचर्स टू फोकस मोर ऑन द टास्क ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। यस,
अगर पेरेंट इन्वॉल्व है, अगर पेरेंट अपने काम में अच्छा है, मतलब इन्वॉल्वमेंट का भी आप बहुत तरीके का मतलब समझ सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन पेरेंट अगर राइटली इन्वॉल्व है तो टीचर्स की बहुत सारे काम पेरेंट घर पे कर सकते हैं, और टीचर अपने काम पे यानी टीचिंग पे ज्यादा फोकस कर सकता है। नहीं तो आधा टाइम टीचर का किस में खत्म हो जाता है, कीप क्वाइट, डोंट बी डिसिप्लिन, तुम्हारे कपड़े ऐसे क्यों है, तुम्हारा मोजा ऐसा क्यों है, तुम्हारा जूता ऐसा क्यों है, तुमने लंच क्यों नहीं लाया, तुम्हारी कॉपी कहाँ है, तुम्हारी किताब कहाँ है, कवर क्यों नहीं है, ये। लेकिन अगर पेरेंट इन्वॉल्व हो जाए उस बच्चे के प्रोग्रेस में, उस बच्चे के स्कूल के काम में, तो ये सब टीचर को क्लास में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कपड़े भी साफ रहेंगे, लंच भी रहेगा, किताब भी लाएगा, कॉपी भी लाएगा, लिखेगा भी, जमा भी करेगा, सिर्फ टीचर का काम हो जाएगा तब टीचर। इसलिए पेरेंट्स को लूप में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, children begin to form ideas and beliefs about themselves based on how their parents communicate. एक बच्चा ये सोचता है मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूं, मैं तो बहुत प्यारा बच्चा हूं, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं जीवन में सब कुछ कर सकता हूँ। और वहीं एक दूसरा बच्चा होता है, सोचता है मैं तो एकदम गधा हूं, मैं तो डल हूं, मैं तो बोरिंग हूं, मैं तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों बच्चे सेम क्लास में हैं, लेकिन दोनों की थॉट प्रोसेस अलग क्यों है? इसमें बहुत हद तक जिम्मेदार हमारे पेरेंट्स हैं। When parents start comparing one child with the other, then that creates frustration and depression. When parents don't give them resources, the child is depressed and frustrated. So please remember this कि बच्चे की पर्सनालिटी के ग्रोथ में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, और वही पर्सनालिटी आपके काम भी आती है स्कूल में। आपको किसी बच्चे को पब्लिक स्पीकिंग कराना हो, ओरेटरी कराना हो, गेम्स में भेजना हो, नाटक कराना हो, डांस कराना हो, गाना गवाना है, असेंबली करवाना है, उसकी पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस कारण। सो इसलिए उसकी पर्सनालिटी के ग्रोथ में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अब सवाल ये होता है कि पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे। यू आर आस्किंग फॉर द लिंक टीचर्स, बट एज वी स्टार्टेड लेट टुडे, I think you understand we'll continue for a little late also. Okay. Now, record a podcast. आप एक ग्रुप बना सकते हैं. This is very common now. जिसमें आप चाहे तो पेरेंट्स को जो इंफॉर्मेशन देना चाहे दे सकते हैं. Set a social media classroom page. This is very good. Of course, you should have the control कि आप उसमें क्या दिखा रहे हो, क्या नहीं दिखा रहे हो. हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में. मान लीजिए 11 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, मम्मी जो है वो नाश्ता लेकर बैठी है, गरम प्याली चाय और 2 पराठे और भुजिया. अब मम्मी जैसे ही पराठा भुजिया खा रही है, उसको याद आ रहा, अरे मेरा बच्चा क्या खा रहा होगा स्कूल में. तो क्या हम कभी ऐसा कर सकते हैं कि लंच ब्रेक का एक वीडियो अपने ग्रुप में शेयर करें, बच्चों के ग्रुप में शेयर करें कि मेरा बेटा भी खाना खा रहा है, मैं भी खाना खा रही, मेरी बेटी भी खाना खा रही, मैं भी खाना खा रही. Are you understanding this? So you have to create an emotional bond with the parents. हमेशा फैक्चुअल बॉन्ड्स ही काम नहीं करते फ्रेंड्स. मैंने आपको पहले भी बताया इमोशनल बॉन्ड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. होस्ट अ वर्चुअल मीटिंग. यस, पेरेंट्स कैन नॉट कम ऑलवेज. टुडे इज अ नाइस sunny day. So dear parents, can we have this? Provide weekly behavior reports. मैं एक स्कूल था जिसमें मैं रोज अपने बच्चों से लिखवा के लाती थी. मैंने एक बुकलेट दिया था उनको कि बच्चे ने क्या क्या किया घर पे, आज कितने टाइम पे क्या क्या किया. एंड पेरेंट्स हैव टू राइट. चिल्ड्रन यूज्ड टू राइट, पेरेंट्स यूज्ड टू साइन दैट कि घर पे उसने क्या समय कैसे व्यतीत किया, टाइम टेबल फॉलो किया कि नहीं, ये लिख के लाओ. प्रोवाइड वीकली बिहेवियर रिपोर्ट्स. पेरेंट्स को खुद पता रहे उनका बिहेवियर कैसा है. इन्वॉल्व पेरेंट्स इन स्कूल एक्टिविटीज. कैसे इन्वॉल्व करेंगे? जैसे मान लीजिए कल 26 जनवरी है, स्कूल तो बंद है, 9 to 12 खुला है. आप मदर्स को बुलाकर, फादर को बुलाकर, अंकल आंटी को बुलाकर, पेरेंट्स तो वैसे मम्मी पापा ही होते हैं, लेकिन बहुत लोग के अंकल आंटी के साथ भी रहते हैं, दादा दादी के साथ रहते हैं, उनको बुलाकर एक छोटा सा प्रोग्राम कर लीजिए. सो इन्वॉल्व योर पेरेंट्स. अगर आपका एनुअल फंक्शन हो रहा है, आप किसी पेरेंट को बुलाइए, 4 मदर्स को कि मेकअप कर दीजिए मैम. मदर्स आर जनरली वेरी गुड इन इट. नेक्स्ट, मेक देम जजेस इन स्कूल प्रोग्राम्स. आप कोई इन हाउस एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कोई थर्सडे एक्टिविटी, फ्राइडे एक्टिविटी, वीकली एक्टिविटी, हाउस एक्टिविटी करते हैं, उनको जज बनाकर बुलाइए. दे विल फील सो गुड, दे विल फील ग्रेट इन फैक्ट कि मैं अपने स्कूल, बच्चे के स्कूल में एज अ जज जा रहा हूं या जा रही हूं. गिव देम अ चांस टू टीच द स्टूडेंट्स. यस, सब्स्टिट्यूशन का आप रोज लगाते हैं. क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड है कि आपके कितने मदर्स और कितने फादर टीचर्स हैं या बनना चाहते हैं, अभी तक बन नहीं पाए, उनकी सब्जेक्ट क्या है? Can you call them when you have too many teachers who are absent? Give them a chance to teach. Invite them as guests for the assembly. Suppose somebody is a doctor, like हमने कोविड के समय किया था. हम ऐसे भी करते हैं. मान लीजिए
आपको मौसम बदल रहा है, तो मौसम बदलते समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? एक पेडिट्रिशियन को बुला लीजिए, थोड़ा असेंबली में टॉक करा दीजिए, felicitate them when you have programs. Somebody, suppose the child has got 100% attendance, why the parents cannot be felicitated? The child has scored very good marks, why can't we felicitate the parents? After all, parents का कुछ तो योगदान रहा होगा ना उस बच्चे की कामयाबी में. Make them responsible for certain things. मैम ये इंग्लिश की कॉपी चेक हुई कि नहीं, ये देखना प्लीज, आपका काम है, प्लीज देख लेना ना. When you give them responsibility, बहुत खुशी खुशी करेंगे. मैम बच्चा रोज ये कॉपी किताब लाए, टाइम टेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप प्लीज देख लेना. डिजाइन ए मैकेनिज्म फॉर रेगुलर फीडबैक. ठीक है, फीडबैक से डरने की जरूरत नहीं है. फीडबैक ऑलवेज गिव्स अस मेथड्स ऑफ इंप्रूवमेंट, प्लेसेस टू इंप्रूव. सो मे बी यू कैन जस्ट सेंड अ गूगल लिंक, फीडबैक दीजिए. Make them realize that they are valued and important for you. Have you ever done a program only for the parents? Kids may not come. Only parents come. Let's sing, dance, enjoy ourselves. Okay. That's very, very important. So these are some ways how to communicate with parents: email, class or school blog, podcast, TV video, social media, in person, through apps or through voice tools. Okay. I think Radhika ma'am, please suggest me this is full of demands can for take it. attendance sheet. You can take, ma'am. You take it. I can continue for teachers. Hardly 10 minutes, please bear with you me. take 10 I've minutes already more. said sorry. I've already said sorry for joining late. If you bear with me I for already 10 informed minutes, them to some technical reasons. I Technical will be problems. very, very indebted. Please. How to build positive relationship with parents? Whenever you see a parent bear a smile, डर, बहुत सारे टीचर्स डर जाते हैं, अरे बाप रे ये पेरेंट आ गया, लगता है फिर से मेरी कोई शिकायत करेगा प्रिंसिपल के पास. ऐसा नहीं. प्लीज वेयर अ स्माइल. हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं. क्या आपका प्रिंसिपल ये कह सकता है, आपके डायरेक्टर सर ये कह या मैम कह सकते हैं कि उनसे कभी कोई गलती नहीं होती है? गलती हम सब से होती है, तो फिर डरने की जरूरत नहीं. एक्सेप्ट इट, मूव अहेड. Learn their names. It would be beautiful, wonderful if you know some names of your parents also. Learn to communicate effectively. वो 7 C's को use करके उनके साथ communicate करिए. Ask questions. Don't wait to call until there's trouble. Please. Sometimes, you know, like in my school, I do it. Every day there are 10 feedback calls. We call parents randomly and we ask them, how is it? Are you doing well? Is there any issue? Show genuine kindness and compassion for the child. वो आप दिखावटी करेंगे ना तो सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो मम्मी पापा है ना, उनको पता है उनके बच्चे को सही में कौन पसंद करता कौन नहीं. सबसे ज्यादा पेरेंट्स को तब तकलीफ होती है जब उनको ये एहसास होता है कि मैम मेरे बच्चे को पसंद नहीं करती है, मेरे बच्चे से गुस्सा है, मेरे बच्चे के प्रति उनके दिल में कोई ग्रज है. ये कभी मत होने दीजिए. Always start with the good news first. Yes. जैसे मैंने आपको बताया, कोई पेरेंट है तो ये कहिए कि बाद में आपको जितनी शिकायत करनी अब कर लीजिएगा, लेकिन पहले आपको ये कहना चाहिए कि बेटा बहुत लाजवाब है ये तो भाई हैंडबॉल में, ऐसा बच्चा तो मैंने देखा ही नहीं. Treat them like a customer. You may not, some of you may not like this statement, but still I would tell you that as long as you treat them as a customer, you will always keep them happy. किसी भी दुकानदार को आप देखिए, वो किसी भी कस्टमर को कभी दुखी नहीं करने देना चाहता. आप एक साड़ी खरीदने गए, आपको साड़ी नहीं पसंद आई, फिर भी बहन जी बैठिए ना, प्लीज दिखाई ना, और दिखाओ, अरे लाल चाहिए, पीला चाहिए, किस रेंज का चाहिए, किस मटेरियल का चाहिए, वो जाने नहीं देगा आपको, क्योंकि आप उसके लिए कस्टमर हो. और हम पेरेंट्स को क्या समझते हैं कि ये तो इसका पेरेंट है, वो भी मेरे कस्टमर है. सो दैट विल इन फैक्ट मेक यू बेटर. There are 3 types of communication that you can try with the parents: oral, written and non-verbal. Non-verbal मतलब मैं आपको कैसे देख रही हूँ, मेरा हाथ पैर कैसे चल रहा है, मेरी आंखें कैसे आपकी तरफ घूर रही हैं, मेरी स्माइल है या नहीं, दैट इज non-verbal. ठीक है. ओके, चल, थैंक यू सो मच सुनील जी. नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, आपके फेशियल एक्सप्रेशन सारे आते हैं. तो जब आप पेरेंट्स से बात कर रहे हैं ना, अंदर ही अंदर आप गुस्सा हो रहे हो ना, ग्रजेस दिखा रहे हो, वो पेरेंट्स को समझ में आ जाता है. सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग विद द पेरेंट्स, प्लीज कीप योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी इफेक्टिव. ठीक है. I'm trying to go short. How to improve your non-verbal communication? Maintain eye contact. Nod your head to convey that you agree. हाँ, पेरेंट बात कर रहे हैं, आप प्लीज सुनो.
पेरेंट बात कर रहे हैं, आप सुनिए, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सर ऐसे हुआ, हाँ मैम, हाँ हाँ मैंने देखा था। अगर आप सिर्फ उनकी बातें ऐसे मुंह बनाकर सुनिएगा तो उनको मजा नहीं आएगा। स्माइल टू शो योर इंटरेस्ट, लीन फॉरवर्ड टू शो द स्पीकर योर इंटरेस्ट। जैसे आप बैठे हैं, आप पत्थर की तरह नहीं बैठे, आपका बॉडी भी काम करना चाहिए, आप आगे ऐसे झुककर बैठे। हाँ सर, सबसे ज्यादा करती हूँ अपने स्कूल में वो ये है कि जब भी किसी पेरेंट के साथ मैं बैठूं या मेरा टीचर बैठे या मेरे फ्रंट ऑफिस बैठे, I always request them to keep a paper and pen in their hand. पेरेंट जो भी कह रहा है आप प्लीज उसको नोट डाउन करिए, इससे उसको बहुत खुशी होती है कि मेरी बात सुनी गई। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और आप डॉक्टर के पास जाकर कहोगे, डॉक्टर साहब मेरा ना कान में बहुत दर्द है, देखिए ना पेट भी गुड़गुड़ कर रहा है, अब माथा तो रोज दर्द हो जाता है, आप ऐसे कहते हो ना। अगर डॉक्टर सुनते हैं आपको लगता है डॉक्टर ने मेरी सारी प्रॉब्लम सुन ली, मेरी आधी बीमारी तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाकर, डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे सर में बहुत दर्द है, और डॉक्टर कहे अच्छा ठीक है मैं चेक कर रहा हूँ, आपको लगेगा कैसा डॉक्टर है, मैंने बात भी नहीं सुना, ये क्या मुझे दवाई देना। उसी तरीके से आप भी डॉक्टर है पेरेंट के लिए, आप एक डॉक्टर है एक बच्चे के लिए, एक पेरेंट के लिए, उसकी हर बात सुनिए। आपको अगर बेतुकी भी लग रही तो भी सुनिए, आपको अगर नॉनसेंस भी लग रही तो भी सुनिए, क्योंकि पेरेंट वांट्स टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट द चाइल्ड एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू लिसन, एंड दैट टू listen actively. Don't be a passive listener, be an active listener. Okay, this is very very important. Now there are certain communication barriers. आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आप पेरेंट को बहुत प्यार भी करते हैं, बच्चे को भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप में और आपके पेरेंट के बीच में कुछ बैरियर्स हैं। पेरेंट आपके बारे में वो नहीं सोचता है जो सोचना चाहिए। तो बैरियर्स क्यों होते हैं? नंबर 1, लैंग्वेज बैरियर। किसी ने भी चैट बॉक्स में लिखा था, मैम प्लीज टीच इन हिंदी। मैं तो कोशिश करती हूँ बेटा कि बहुत ज्यादा हिंदी भी बोलूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोलूँ। अगर फिर भी मेरी बैलेंस आपको सही नहीं लगती है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं कोशिश करूंगी अगली बार ज्यादा हिंदी बोलने की, क्योंकि मैं हिंदी में भी कंफर्टेबल हूँ। तो लैंग्वेज कैन बी वन बैरियर। जैसे मैं बहुत सारे जगह में ऑब्जर्व करती हूँ कि अगर पीटीएम में कोई पेरेंट आता है तो टीचर अपनी इंग्लिश शुरू कर देते हैं, यस सर यू कैन डू दैट, यस द चाइल्ड इज नॉट स्टडिंग, फलाना फलाना जो भी बताना। लेकिन आपको देखना होगा मैडम या सर जो भी आप लोग हैं यहाँ, कि मेरे सामने जो पेरेंट बैठा है उसका लेवल क्या है। जिस तरीके से आप क्लास 5 में जाकर पढ़ाते हैं, आप क्या वैसे ही क्लास 12 में जाकर पढ़ाते हैं? नहीं, आप अपने लेवल को चेंज करते हैं। सिमिलरली जब आप पीटीएम अटेंड कर रहे हैं, जब आप किसी बच्चे का पीटीएम ले रहे हैं, किसी पेरेंट का पीटीएम ले रहे हैं, तो प्लीज पेरेंट के लेवल पे जाइए। पेरेंट क्या चाहते हैं, वो किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, वो इतनी दूर से आपके घर आए हैं, आपके स्कूल आए हैं आपके साथ बात करने के लिए। आप जैसे लैंग्वेज गैप कर दोगे आपका परसेप्शन खत्म। नेक्स्ट इज विजुअल परसेप्शन। हम सब समझते हैं कि इसने सूट पहना है, बूट पहना तो बड़ा स्मार्ट है बाबू, दिया अब तो वो बहुत स्मार्ट है। लेकिन अगर कोई चप्पल पहनकर आ गया, उसके बाल कुछ उखड़े बिखरे हैं, तो हम समझते अरे यार ये तो बड़ा फालतू पेरेंट है, इसको जल्दी टरकाओ। नो, विजुअल परसेप्शन शुड नॉट बी अ रीजन फॉर जजिंग एनीबॉडी, प्लीज। पास्ट एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट। 12 साल 15 साल एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, किसी एक साल किसी टीचर के साथ, प्रिंसिपल के साथ, फ्रंट ऑफिस के साथ लड़ाई हो गई। अबे जैसे ही पेरेंट फ्रंट ऑफिस में घुसेगा, फ्रंट ऑफिस वाले कहेंगे ये बहुत लाखों है, आ गई फिर से। ये नहीं होना चाहिए। एक बार हो गया, फॉरगेट इट, आगे बढ़िए। प्रेजुडिस, ये पेरेंट तो मुझे पसंद ही नहीं करता, ये पेरेंट तो जब देखो प्रिंसिपल के पास जाकर मेरी शिकायत करता है, ऐसा सोच मन में नहीं रखना है। फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को प्योर रखिए, अपने फीलिंग्स को फ्री फ्लो करने दीजिए, और ध्यान रखिए अपने इमोशंस पे। मैंने इमोशंस का भी क्लास लिया है कि आपके कैसे इमोशंस उठ रहे हैं, उस पेरेंट को देखकर उस पर कंट्रोल करना सीखिए। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट। आप कहाँ पेरेंट से बात कर रहे हैं? मैं हमेशा टीचर्स को मना करती हूँ कि जब आप बच्चों की छुट्टी हो रही है, बच्चे डिस्पर्स कर रहे हैं, वहां प्लीज आप पेरेंट्स से मत बात करें। दैट इज नॉट द राइट प्लेस टू टॉक। वहां आप भी एजिटेटेड हो, वो पेरेंट है, वो बच्चा है, वो बच्चा है, वो बच्चा है, वहां अगर आप बात करने लगोगे तो जाहिर सी बात है आपके पोलाइटनेस, आपकी स्माइल में कमी आ जाएगी। But don't communicate with the parents the wrong place. Always communicate at the right place. पर्सनल फैक्टर्स, आज मेरे सर में दर्द है तो मैंने पेरेंट्स से झल्ला कर बात कर दी, ये नहीं चलेगा। यू आर प्रोफेशनल्स। कल आपका सेशन हुआ था एक प्रोफेशनलिज्म पे, बहुत बेहतरीन सेशन था। सो प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू बी प्रोफेशनल्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके कम्युनिकेशन में बैरियर्स नहीं आएंगे। ठीक है, and the last but not the least most important thing is what is bad communication.
अगर अच्छी कम्युनिकेशन के बारे में आपको इतनी सारी चीजें बताई, तो आपको बैड कम्युनिकेशन के बारे में भी मुझे बताना चाहिए। तो बैड कम्युनिकेशन क्या है? बैड कम्युनिकेशन तब होता है जब आप पर्सनल हो जाते हैं। इस बच्चे को अच्छा नंबर नहीं आया मतलब पेरेंट खराब है, या इस पेरेंट ने मेरी एक बार शिकायत की थी प्रिंसिपल के पास, इसका मतलब यह है कि पेरेंट बदमाश है, बायस्ड है। नो प्लीज, एक इंसिडेंट खराब हो सकता है मेरे लाइफ का, इसका मतलब वो पूरा किताब ही खराब हो जाए जरूरी नहीं, पूरी चैप्टर खराब हो जाए जरूरी नहीं। एक आपका आपके हस्बैंड के साथ एक दिन लड़ाई हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं आपका हस्बैंड खराब है या आपकी वाइफ खराब है, वो सिचुएशन खराब था। ठीक ऐसी प्रोफेशनलिज्म अपने पेरेंट्स के साथ रखिए। आपके पेरेंट के साथ एक दिन आपका डिस्कशन खराब हो सकता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पेरेंट ही खराब है। नेक्स्ट, सम मोर एड-ऑन्स टू बैड कम्युनिकेशन इज वन वे कम्युनिकेशन। सिर्फ आप बोल रहे हैं, अगला सिर्फ सुन रहा है, या सिर्फ वो बोल रहा है आप सुन रहे हैं, दोनों तरफ से होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। यू डायरेक्टिव्स, कभी यू वर्ड मत यूज कीजिए। सर आप जो है ना अपने बच्चे को देखते नहीं, आप पढ़ाते नहीं, आप नहीं करते, नहीं वो उसका काम नहीं है। उसने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लिया है, वो पेमेंट कर रहा है फीस, तो आप दोनों का काम है। Don't say only negatives. Don't be personal. Don't disregard feelings. Respect. Be courteous. ठीक है? और sarcastic मत होइए। आप प्रिंसिपल ने आपको बोला है भाई किसी पेरेंट के साथ लड़ाई नहीं करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाँ सर आप लोग तो जो चाहे वो कर सकते हैं, ये नहीं करना है। सरकाजम नहीं करना है। आपको जेन्युइनली उस पेरेंट को हेल्प करना है, जेन्युइनली उस पेरेंट को प्यार करना है, जेन्युइनली उस बच्चे के प्रति अपनी उदारता दिखानी है। ओके, next is keep conducting parent teachers meeting as much as you can, because parent teachers meeting will help you communicate with your parents. Conduct annual open houses, parent teacher conferences, not only meeting, conference. कोई पेरेंट आपका IITian है, कोई पेरेंट है NIT में है, कोई पेरेंट बहुत अच्छा डॉक्टर है, कॉन्फ्रेंस करिए, जनरल पेरेंट्स को बुलाकर उनसे कुछ बात करवाइए, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस करवाइए, एंड पेरेंट टीचर एसोसिएशन की हेल्प लीजिए। हम में से बहुत सारे स्कूल्स में पेरेंट टीचर एसोसिएशन एक डम्ब, एक सिर्फ पेपर वर्क है। सो पेपर वर्क नहीं करना है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन को एक्चुअली एक्टिव करिए, एक्चुअली हेल्पफुल बनाइए, क्योंकि पेरेंट्स आपके स्कूल की हमेशा अच्छाई चाहेंगे, क्योंकि उनका बच्चा उसमें पढ़ता है। एंड उनके सजेशंस को वैल्यू करिए, उनके सजेशंस पे काम करिए, फोन कॉल करिए, ईमेल्स करिए। And please remember that communication is a key to personal and career success. With these words, I would like to end the session. I know the lot is becoming very restless. I have taken a lot of extra time. I'm once again extremely sorry for this, but I would like to end the session saying that parents are your very respectable, very important, very valued stakeholders. Take good care of them, and I'm sure they will also take good care of you. Thank you so much. Any questions, please? Any questions? Anybody wants to ask any questions, any doubts? Link is not working. Most of them are saying link is not working. It is working. It is working. I cross-checked it. Thank you. Thank you so much, dear educators, for flooding the chat box with your love, with your emotions, with your feelings. You know, these little words that you put up in the chat box actually makes me work harder. Every day, it motivates me to spend some time for my sessions so that I can learn something new and then deliver it to you. Thank you so much, dear friends. Thank you once again, Aryavat Sahodya, Himanshu sir, Simple ma'am, and of course, my dear Radhika ma'am, and my CB Singh sir, my very respectable, honorable sir, for giving me this opportunity once again. Thank you. Sorry for joining late today. I'm so sorry. Thank you so much, ma'am. Thank you, Mitali ma'am, for sharing your knowledge, ideas, and views. Today's topic was very important because as we are principal and teachers, हमें सबसे ज्यादा पेरेंट्स को ही डील करना होता है। ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे करियर में होती है। सो मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा एक बात कहा कि बेस्ट कम्युनिकेशन का पार्ट ये है कि हम एक अच्छे लिसनर बने। सो मैं सारे पार्टिसिपेंट से ये जरूर कहूंगी कि मैम से बेहतर किन्हीं का कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। सो अगर आप सभी ने सुना होगा तो निश्चित अगली पीटीएम जब भी आपकी होगी आपके स्कूल में, सो पेरेंट्स गुस्से में आएंगे, लेकिन अगर मैम की बातों को हम फॉलो करेंगे
तो पेरेंट्स निश्चित स्माइल करते हुए वापस जाएंगे। सो थैंक यू सो मच मिताली मैम, आप बहुत अच्छी चीजें हम लोगों के बीच में रखती है, और मुझे लगता है कि आपको सॉरी बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए पार्टिसिपेंट्स हमेशा वेट करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, Thank you and so much. thank you CB Singh sir, thank you Radhika ma'am, thank you Himanshu sir for this Mitali, training. sorry, Yes, Simple, yes, my name yes, yes, ma'am. There is a one question for you, ma'am. How to tackle the problem if child is starting for school from home but not coming? I'm sure your school must be having that attendance system. So until and unless, see, there are two aspects of this. One is a legal aspect. Legal aspect says that if the attendance is not marked in the school, school is not responsible for the child. So this is one thing. If you have your attendance register, ERP attendance, and you can inform the parent that the child has not come to school. And दूसरी चीज ये है, if we don't see the legal, if we see the emotional aspect and our responsibility as teachers, then of course we should try to find out the why the child has not come to school. This is very important. वो बच्चे को डांटने से नहीं होगा मैम, हमें पेरेंट के साथ, बच्चे के साथ अलग अलग जॉइंट मीटिंग करनी होगी और ये समझना होगा कि बच्चा क्यों स्कूल नहीं आना चाहता है। अगर स्कूल वाकई एक हैप्पी प्लेस है, एज एनईपी सेज, देन द चाइल्ड विल वांट टू कम टू स्कूल। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है उसके पर्सनल फ्रंट में, उसके स्कूल में, तो फिर बच्चा हो सकता है स्कूल नहीं आना चाहे। तो ये रीजन का मैम थोड़ा सा पता लगाना होगा और अकॉर्डिंगली वो चेंजेस लानी होंगी स्कूल में या घर पे भी। बहुत समय बच्चे इतना अपसेट होता है, वो घर से, स्कूल से, हर जगह से दूर चला जाना चाहता है। तो हो सकता है प्रॉब्लम स्कूल में नहीं है, घर पे है। तो हमें ये पता लगाना होगा और उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि घर पे कोई प्रॉब्लम है तो नेसेसरी नहीं कि हम सॉल्व कर सकें, लेकिन एटलीस्ट एक पहल कर सकते हैं, पेरेंट्स से मीट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे, स्टूडेंट इसलिए भी नहीं आना चाहते क्योंकि उनके कलीग उनको परेशान करते हैं। कई बार ऐसी भी इश्यूज आती है, बिल्कुल हाँ हाँ, जिसको हम बिल्कुल, लोगों को बुलिंग इन द पेरेंट्स के साथ स्कूल, मिलकर डिस्कस करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। Maybe the child is being bullied in school, maybe the child is not getting the love and affection of the teacher. There could be so many reasons. Maybe the child has not done homework, इसलिए आज स्कूल नहीं आएगा. I mean, small children can have such petty reasons also not for coming. The question was, ma'am, how to bring the students from home. Maybe counseling also plays vital role in it. Yes, yes. मैम, सबसे पहले अगर कारण आपको पता चल जाए कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, तो you have to work on that reason. If that reason is worked upon, the child will definitely want to come to school. Participants, if not, over to Simple ma'am. So there was a question from Neha ma'am also, I think the same thing. Ma'am, a child starting from home for school but not coming, how to tackle this problem? I think Neha ma'am, you've got your answer. I think there is no any questions. Yes, ma'am. One, yes. So thank you so much, ma'am, once again. Thank you so much. Thank you. So participants, you are requested to fill the Google link, and one humble request from you all, please fill your name correctly. Many times we have seen in the place of name you write, yes, I have completed 40 minutes. Sometimes you write, my name has been registered. So please don't write this. Just you put your name in capital letters. So it's my kind request. Please put your name in capital letters, your school code correctly. And second, as with Simple ma'am has already informed you what are the things you have to keep in handy. Your school code, Shiksha ID, and your name should be written in capital letters. So school name should be written in capital letters.
And many times participants जो क्वेश्चन होता है ना, यदि आपका नाम रजिस्ट्रेशन में नहीं होगा तो नहीं डालेंगे, तो वो लोग उसके जगह पे लिखते हैं यस मेरा नाम डाला हुआ है, मैं 40 मिनट ट्रेनिंग कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, ऐसा ये लोग लिखते हैं, नाम नहीं लिखते हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट है काइंडली आप नेम के जगह पे अपना नाम कैपिटल लेटर में जरूर लिखें और स्कूल कोड को करेक्टली भरें। राधिका मैम हम लोग क्लोज कर सकते हैं yes, क्या? we can. No, 6:10. The link will be 6:10. active till 6:10. All Okay, the okay. participants are requested to complete the link. And someone is writing that the link is not working. For your all information, I'm just doing with my mobile. That one link is absolutely working. So you might see that your network connection, if your network is not proper, maybe that may be the reason. आपकी network सही Yes, नहीं है, शायद आप yes, नहीं कर पाएंगे, please. आपके 7 क्वेश्चंस है, many are asking that आप don't worry, क्वेश्चन जितना है उतना कर दीजिए, उसकी प्रोपोर्शनेट होगा पासिंग मार्क। मैम मधु मैम हैज रिटन हियर मेरा अटेंडेंस नहीं हो रहा है। मैम ये आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैम आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। सर हरिराम सर, यू नो नीड टू राइट हियर द स्कूल कोड, आई हैव टोल्ड यू टू राइट द स्कूल कोड इन द गूगल फॉर्म दैट मैम हैज शेयर्ड इन द चैट बॉक्स। Radhika ma'am, can we post the Google form link again? I already posted just now, within a second. Okay, ma'am. Yes, one, two are requesting. So I posted again. Yes, thank you, ma'am. Ma'am, it said about my mail. Ma'am, it said about my mail. मधु मैम क्लियर नहीं हो पा रहा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप अपनी में भी हो सकता है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको लिखना होगा, वो शेयर आपको कैसे शेयर करेंगे, वो तो इसमें आ जाएंगे, लिंक आपको चैट बॉक्स से ही लेना पड़ेगा, लिंक विल नॉट सेंड टू योर मेल, link for joining will be sent to your mail, but link for this attendance will be in the chat box. You have to take from the chat box. If you are any reason you are out from that, you can ask your colleague to share to you through WhatsApp or something. I cannot do it. How to check accuracy? Why not so score? Why do you bother about the score? You do it. You do it. The score automatically will be taken by the Google form. Accordingly, certificate will be framed. Consent. अंजलि मैम, जैसे हम लोग बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो रिजल्ट सेम टाइम पे नहीं देते, तो जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट सेम टाइम पे मिले, आप अपना गूगल लिंक को भर दीजिए। Link is working, ma'am. Okay, link is working absolutely. I just put it. Yes, ma'am. Now no any issues. Once again, the participants, those who are completed the formalities of attendance as well as request, you can leave the meeting. 6:10 only, up to 6:10. 10 minutes more there. Please do it as a. The participants, that sample is given 66875 at the CBSE at the rate cbseshiksha.in. That's a sample only. You need to write your code. You can copy it and remove the code number 66875 and write your code.
There's no need to say sorry, Neha. It's already said that what are the problems generally faced by the school or the teachers. What that happens with the child when we try to contact with his parents? He gets absconded. he gets with his यस मैम, ये हो सकता है, बट चाइल्ड के बिहेवियर के लिए चाइल्ड को अगर आपको स्कूल तक लाना है, उसमें पेरेंट्स से बिना बात किए तो हम नहीं कर सकते. Ma'am, one suggestion from my side. I'm not an RP, but I'm giving you one suggestion. एक बार उनके घर विजिट कर लीजिए. मैम, इनका कहना है कि पेरेंट्स फिर उनको ये करते हैं ना, नाराज होते हैं नो बच्चों नो से. नो, ऐसे नहीं है. देखिए हमारी सामने है, प्यार से तो सब हाँ. कुछ हो सकता है मैम. Love, that's a powerful word. That you have to go home and don't tell about all the problems. Your son is not coming, this and that. Yes, Just try रणधीर to सर, understand यू that. हैव रिटन आंसर नॉट गेट. आपका क्वेश्चन क्या था रणधीर सर? अब तो आरपी मैम लीव कर नहीं, क्या चुकी हैं, क्वेश्चन लेकिन है? फिर भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं. क्या हाँ, क्वेश्चन था आंसर मैम? नॉट गेट. रणधीर कुमार क्या था सर, क्वेश्चन? प्लीज आप अपना क्वेश्चन फिर से पोस्ट करिए. We are regularly facing such problems, so we can solve your problems. Answer not got. Who is the Rendir? What is? Let me see the Rendir Kumar answer. What answer? मैम, he lives with his brother. Okay, he lives with his brother. That means you are allowing the child who is without a parent. There will be form at the time of admission time. Who is the parent? Local guardian. You need to take a local guardian's name, sir. ऐसे नहीं हो सकता है कि हम ये 15 साल के बच्चे को बाई के उसमें हम एडमिशन ले लेंगे. हमें ये जरूरत है, आप अपनी स्कूल की प्रिंसिपल को भी कह दीजिएगा लोकल गार्डियन की ले लेता है कि हम लोकल गार्डियन तक कम्युनिकेट करेंगे. अदरवाइज क्या होगा, बच्चा कुछ कर लेगा, मेरा पेरेंट्स तक ये मेरा शिकायत जाएगा तो मेरा पेरेंट्स वो करेगा, बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे. तो हमें एक ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करने की जरूरत है बच्चे के भविष्य के लिए, और उससे किसी तरह से वो बाई के साथ भी रहे, जाके मिलके एक फ्रेंडशिप उनके दिल की जोड़ने के लिए कोशिश कर लीजिए सर. बहुत सारे इश्यूज सॉर्ट आउट होता है. मैं आपको बताती हूँ, मेरे स्कूल में भी ऐसे एक बच्चे हैं जिसके मैम, पेरेंट्स. नेहा मैम का कहना है कि उनके भाई जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और हाँ? वही लोकल गार्डियन है. तो मैम, ये तो निश्चित है, अगर वो एम्प्लॉय है तो वो संडे एडल्ट बुला है, दीजिए इट मैम. मीन्स तो वो मैच्योर्ड है और आप उनसे बुलाकर बात कर सकते हैं. कई बार जितनी चीजें आप देखते होंगे अपनी लाइफ से भी, कि जितनी चीजें हम अपनी मम्मी पापा से नहीं बोल पाते, उतने अपने भाइयों से और बहनों से बोल पाते हैं. सो सिबलिंग्स का रोल बहुत अलग होता है और मुझे लगता है कि अगर आप उनके बड़े भाई से बात करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. There is an I have what is written? I have Yesterday I filled have my done a name in mistake the in name filling. of the school. क्या How to बोलेंगे? fix this problem? Will the certificate here? That is issues. Let's see that whether we could sort out the problem, we will sort out it and issue it. Otherwise, ऋषभ सर, ओनली द थिंग वी कैन हेल्प, अगर आपका मेल आईडी जो आपके एसटीएनसी ने भरा है और आपने भी वही मेल आईडी इस्तेमाल किया है, तो शायद आपके सर्टिफिकेट इशू हो जाए, है ना राधिका मैम? yes, if he is qualified also. 3 हाँ, months. एंड क्वालिफाइड आल्सो. सो मेल मस्ट बी सेम एंड यू मस्ट बी क्वालिफाइड. सो हम लोग उसमें फिर देख सकते हैं. दोबारा तो नहीं भर सकते सर आप. जिसने पेरेंट्स की बोला गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैम एक बार घर जाने के लिए कोशिश कर लीजिएगा. अकेले कभी मत नेहा जाइएगा. मैम, यस. अकेले कभी मत जोड़िए, कोई जेंट्स टीचर किसी के साथ में जाइएगा. इस तरह से बता दीजिएगा यू आर कंसर्न about the child. I'm sure about that there will be change. It's not an easy job. New generation after COVID, their mental status and everything changed. That is the reason nowadays we are always struggling for that training and all. We are learning also, and we know that health education, mental and health education, this topic is very important. So we need to know about that. The what are the background. You need to diagnosis his problem firstly, and then I'm sure about that you can sort out it.
Yes, all the participants, once again, you can leave after filling up the form. It's now 4 minutes more. After that, I'm going to wind up the session. सेशन बंद कर देंगे. आप लोग जल्दी से जल्दी लिंक भर दीजिएगा प्लीज. और आपको पता होगा 2 चीज आपने ट्रेनिंग अटेंड किया, टॉपिक आपको पता है, आपको आरपी कौन पता है, फिर आपको एक क्वेश्चन आउट ऑफ 5 से फिल करना है. इसके लिए इतना टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको ईज कर दिया. Just to pick up the points, because very valuable points ma'am shared with us. It's very important how to interact with others. What is your gestures, your smile, your concern. Parents should feel that you're not in that your mistake is finding out, then we are howling at the parents. That's not good. So I am sure about that. After session, we are all learned a lot. Please, attendance. Many of you are still not fill the attendance. Kindly fill it as immediately. Now you can take it that if you get 2 minutes more only, I'm good. Ma'am, 7 questions, but written Yes, 10. it's a 7 question only. I told already 2 questions you well known. That's topic and then out of 5 questions, when other 5 questions, I mean that only. There are 7 questions, 2 questions very familiar to you because who is RP and what is the subject. And there are other 5 questions among that's very easy. You are listened properly, then you can answer it very nicely. Only 7. The last one is written 10. Don't worry about it. I will do the correction. Let me Score is not shown in quiz. Pramod sir is writing. leave it. I'm going to wind up it, ma'am. Okay? Okay, okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Welcome.